Hello everyone, welcome back. Uh, I hope the sound is clear. So today we'll discuss dual nature of radiation and matter. ये चैप्टर आज थोड़ा रिवाइज करेंगे. ऐसे ही डेली अप टू एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम दैट ऑन 6 मार्च तक डेली रात को एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे. So today we'll revise dual nature of radiation and matter. So in this revision series, it will be very helpful for your exam. बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये. तो ये चैप्टर CBSE आप देख लो इसमें क्या क्या कंटेंट है, पहले वो देख लेते हैं. इस चैप्टर में कंटेंट आप देखोगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपको हर्ज ऑब्जर्वेशन, लेनर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे चीज़ आपको ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा. और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. उसके साथ साथ डुअल जो डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो ग्राफ्स इंटेंसिटी वर्सेस आपका फोटो करंट, ये सारे ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे. तो ये सारे ये चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा. साउंड एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वर्क फंक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. साउंड कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ओके, तो साउंड क्लियर है. तो फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इट इज द phenomenon of the emission of electron from the surface of metal when light radiations of suitable frequency fall on it. तो सपोज एक मेटल सरफेस है और ये मेटल सरफेस पे लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इफ़ इट विल इंसिडेंट, लेट्स से इसका फ्रीक्वेंसी न्यू, और आप एफ से भी इसको फ्रीक्वेंसी को सिंबल को यूज कर सकते हो. तो ये सुइटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स इट विल शुड हैव सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इस पर कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा.
these electrons which will come out from this surface of the metal surface are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectrons. ठीक है, तो ये सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वर्क फंक्शन क्या है? व्हाट इज वर्क फंक्शन? ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वर्क फंक्शन ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल surface is known as the work function. So this is the minimum energy required by an electron to jump or to just escape from the metal surface. So on the surface of this metal there are electron है बहुत सारे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इजेक्ट नहीं होते हैं सरफेस से. उसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है. तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन require to escape from the surface, that minimum energy is called work function. phi 0 भी डिनोट करते हैं, उसको w0 भी करते हैं. and this is your energy is h nu. Here will represent h nu 0. This is threshold frequency. This is threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. उसको हम क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के टर्म पे लिखेंगे. ये टर्म्स कैसे आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म पे लिखेंगे तो क्या होगा? एच सी बाई लैम्डा 0. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एच सी बाई लैम्डा. फ्रीक्वेंसी को हम सी बाई लैम्डा 0 सी बाई लैम्डा पे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, will represent. So nu 0 and lambda 0 are threshold frequency and threshold wavelength respectively. Now here is a graph, experimental setup करके ये ग्राफ हम लोग स्टडी किए. तो ग्राफ स्टडी पे क्या पता चला? if we'll make the graph between the intensity and photoelectric current, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन. So more will be the intense light, more will be the photo current. There is a difference between photo current and stopping potential. What is photo current? Photo current intensity means number of photons will be more. So when intense light will incident on the metal surface, what will happen? That means more number of photons will strike and more number of electron will come out. So if more number of electrons will come out, number will be more, then what will happen? Then your current will be more, photo current will be more. So if the incident light intensity is more, photo current will be more. But इधर बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है. इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मीन्स लेट्स से 100 फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग, बट ये नहीं बोल सकते 100 फोटोन्स, बट उन लोगों का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, नंबर ज़्यादा है. 100 सपोज 100 it will be in the number of the number is very huge, but let's say take an example कि 100 number of photons are striking the 100 numbers of photons are striking the metal surface. तो ये हो गया उसका let's say intensity of the light, 100 number of photons. Now if you will reduce this number, then the photo current will reduce because number of electrons that will come out from the surface will be less, photo current will be less. But what will happen to the your potential, that is stopping potential or
you can say uh, photo electric emission. What will happen to the photoelectric emission? Will the electron come out if the frequency will be less? फ्रीक्वेंसी लेस होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? That means if your incident light intensity is more but frequency is less than the threshold frequency. Suppose threshold frequency मान लो 50 हर्ज है, तो 50 हर्ज से कम इंटेंस लाइट उसका जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज से कम फ्रीक्वेंसी और 40 हर्ज का लाइट बट इंटेंसिटी वेरी हाई, इफ इट विल इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, विल द इलेक्ट्रॉन कम आउट? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एक मेटल का होगा वो फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट होगा। इफ द इंसिडेंट लाइट विल बी फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, will not get the photoelectrons. So only when the frequency, the incident frequency will be greater than the threshold frequency, only the incident frequency, if it will be greater than the threshold frequency, incident frequency if it will be greater than the threshold frequency, then you will get the photo emission will be, or photoelectric emission will be possible. Photoelectric emission will be possible here. So here photoelectric emission will be possible. When the frequency is greater than the threshold frequency, the frequency is greater than threshold frequency, then photoelectric emission will be possible. So now we discussed about the intensity of the light and the relationship with the photoelectrons, photocurrents. So now let us discuss one question. Let us discuss one question. In the study of photoelectric effect, the graph between the stopping potential and frequency nu of the incident radiation on two different metals P and Q shown below. ठीक है, तो इधर two different metals are there, one is metal P and another is plate or metal Q. Two metal plates are there, P and Q, and the incident frequency in the study of photoelectric effect, the graph between the stopping potential and the frequency of the incident radiation. So nu is the frequency of the incident radiation. Which one of the two metals has the higher threshold frequency? ये दोनों मटेरियल से किसका ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है? In which of the two metals has the higher threshold frequency? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखिए 4, दिस इज 6, ठीक है, सो दिस विल बी 2 आई थिंक, सो ये 3 के आसपास, सो दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, and the threshold frequency for Q is up to here 6, right? It will be 6 into 10 to the power 14 hertz, let's say, and for P it will be approx 3 into 10 to the power 14 hertz.
So which one of the metal has the higher threshold frequency? तो obviously Q के लिए ज़्यादा threshold frequency होगा, तो answer of I will be Q. Determine the work function of the material which is the greater value. Determine the work function of the material which is greater value. तो जिसका threshold frequency ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है. तो Q का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका वर्क फंक्शन निकाल सकते हो. तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है W0 का? H न्यू 0. H न्यू 0. तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी निकल गया. फ्रीक्वेंसी निकल गया, ठीक है. सो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजीली यू कैन फाइंड आउट यूजिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट. जस्ट यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इसे आइंस्टाइन इक्वेशन को ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशनशिप विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल लेट्स से इट्स ए वैक्यूम चेंबर and two metal plates are there. If it will be connected, one side will be let's say N positive, another side will be negative. You can change the terminal also. So if light of suitable wavelength will incident over it, let's say UV or higher frequency wave light, so what will happen? Electrons will come out. Electrons will come out and you have to make this one positive potential, so that what will happen? These electrons will be attracted towards it and the circuit will complete, right? So to stop these electrons, to reach this side, what we have to do? We have to make this side negative potential because electrons are coming. So electrons are coming means we have to provide negative potential to this side. So we will provide minus V0 or we will provide some potential that is EV0, that will be equal to your kinetic energy. So this much of energy will provide so that these electrons which are coming from or coming after emitting from this plate, the emitter plate will not reach the collector plate. Will not reach the collector plate. Okay, so it will not reach the collector plate. So this is the stopping potential. This V0 is its stopping potential. It is stopping potential. Stopping potential. So we can write Einstein equation in terms of stopping potential. तो Einstein equation को कैसे लिखेंगे? ना kinetic energy is your h nu minus h nu naught. This is the k max equal to kinetic energy max equal to h nu minus h nu naught. This is the Einstein equation. So what is h nu naught? H nu naught is the your work function here, and this kinetic energy we can write in terms of stopping potential. So we can write also EV0 is h nu minus h nu naught.
So this formula is also important for us. In different numerical we will be using this E V0 minus h nu minus h nu naught. So this one also we can express in terms of wavelength. In terms of wavelength also we can express, because we know that your frequency is 1 by lambda c by lambda. Frequency is c by lambda, lambda by c is t. So frequency we can write c by lambda. So we can write h nu as hc by lambda minus hc by lambda 0. This is your EV0. Or we can write V0 is h by E. We can write V0 is h by E c by lambda minus c by lambda 0. Or also you can write this is hc by E 1 by lambda minus 1 by lambda 0. This is your V0, stopping potential. Stopping potential means, because this is charge into V, we know that our work done is QV. Work done is QV. So Q is here, charge is E, and V is the potential. So the amount of voltage we are providing, because we will provide negative voltage, gradually we will make this terminal negative. So this negative voltage, the more we will provide negative voltage, these electrons will not able to come. It will be stopped reaching this side. So this is called stopping potential. So stopping potential means we have to provide this energy, same kinetic energy as of your EV0. So this is Einstein equation in terms of your stopping potential and also in terms of wavelength. Also you can express, you can write the de Broglie wavelength. This is also important part of this chapter. De Broglie wavelength. So de Broglie wavelength, lambda is what? H by P. What is de Broglie wavelength? De Broglie wavelength is lambda is H by P. So P is the momentum, S is the Planck's constant. H is the Planck's constant and P is the momentum. Now you can write P in terms of kinetic energy. How can you write? Because kinetic energy is half mv square. So in terms of P, if you want to write, this will be 1 by 2mp, P square is K. Or you can say P square is 2mk, or P is under root 2mk. So you can write H by under root 2mk. You can write H by under root 2mk, which is your wavelength. So if kinetic energy is given, and mass is given, h is a constant, Planck's constant, you know. So you can find out the wavelength lambda. Also we have discussed here, what we have discussed, that your kinetic energy we can write in EV0 in stopping potential. In terms of stopping potential we can write
right? So if I want to write this your wavelength in terms of kinetic energy, so your lambda will become h by 2m ev0. Also we can write the wavelength in terms of stopping potential. So this one will be a constant. You can write that this is 1.27 nanometer root V. So this constant you can remember, the value of this constant you can remember. So this is the introduction and part 1 of the revision of this chapter. So in the next class, in the uh, next next uh, next video, we'll discuss some more questions from this chapter, and also um, we'll also solve case based question, right? Chapter wise we'll try to cover some case based question, because many students have some doubts from this case based question, how to approach the case based questions. So we'll be discussing in the next classes. So thank you for watching. See you in the next video, next class. Probably we'll have the class every day till the board exam around 10 p.m. Thank you.